हम एक तरफ बात कर रहे हैं 2047 में विकसित भारत की, बट विद दिस रूढ़िवादी सोच कि नहीं हम सीनियोरिटी को देखेंगे, हम इनोवेशन नहीं देखेंगे, आर्ट वी डिस्करेजिंग द एग्जिस्टिंग टैलेंट इन द कंट्री? You can be innovative in the government in certain extents and not beyond that. But we should be more innovative as a system. The onus of changing system lies with the parliamentarians or with the executive. हम जिस स्पेस पे ग्रोथ कर रहे हैं और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, क्रिएटिविटी दी जा रही है, चेंज इन सिस्टम्स हैं, आर वी अलाइन्ड विद द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड? As a country, we need to prioritize certain things. Health is number one, education, fitness, and skills. These four. Will democracy make us a Viksit Bharat by 2047? The thing is that विकसित भारत हमें इसी में बनाना पड़ेगा. जितना विकसित होगा उतना बनाना पड़ेगा. India is never going to be perfect. Neither is China. What is our execution program that we should have? कि ये 5 चीजें करनी चाहिए, very focused, and 2047 we are there. Tourism से, why are we doing so poorly on that? What can be done better? And what are again 5 things that you want to change if India becomes a developed nation? What do we dream of? और नहीं बनता, क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेगा? One fundamental reason. Jai Hind, friends, welcome to Revelations with Manas Ji on Manas Verse. So, I thought I'll reach out to somebody who's a sports person, who's a TEDx speaker, who's a motivational guru, and who happened to be one of the perhaps few that I am aware of who decided to leave a glorious career of civil services, very close to technology, responsible for building or helping establishing IT parks, very close to tourism. You must have guessed it by now. I'm joined by Vivek Atre, sir. Thank you, sir, for joining in. Thank you, Manas, for the invitation. I am happy to be here. In the civil services, the promotion, is it based only on seniority or is it based on merit and innovation? Because the world is changing. There is a principle of seniority come merit, which is established. Normally, it goes as per seniority, unless somebody has a bad record, an entry in the record which is not desirable, or there is a criminal case pending or something like that, and that case which is pending should also have been gone to some extent, like charges have been framed or something. Just by lodging an FIR against someone, anybody can scuttle his promotion. किसी बात पे हो गई. So that is not enough. So seniority come merit. 99% it's seniority. 1% it is merit because the person did not do something well. So government में that part is not there what you could expect in a corporate firm or in a cricket team. Shubman Gill became the captain without going through the ranks, na? Gautam Gambhir to chalo chhod hi do. But the point is that we have a situation where a person has been picked on merit. So, do you think it's time to change that, sir? Oh yeah, why not? We should have people getting out of turn promotion. There was a concept earlier that state civil service officers who joined the Haryana Civil Service, Punjab Civil Service, I was also one of them. We get promoted to the IAS, let's say after 17 years or 18 years, let us say. There was a chance that there would be an exam after 8 years amongst them. And those who did well in that exam or interview after 8 years of service, they would get accelerated promotion into the IAS. वो scuttle हो गया. But that would be one way of getting merit-oriented people. And also, if direct IAS, IPS people are doing better than others, why not change the system and give them accelerated promotion? Who will change it, sir? I mean, Parliament. is the parliament, the Parliament onus has lies with the parliament or it lies with the Union Public Service Commission? Parliament. Parliament. Ultimately, they are all constitutional posts. And the civil services, the civil servants are appointed by the President of India. तो वो आसानी से चेंज नहीं होगा. So it's an iron frame. I remember the article which I'm talking about, the India Today article, sir, the iron frame article. So, sir, coming to that, with this iron frame and with this, the way it is intertwined, and it is somewhere passing the buck. कि ये parliament का काम है. There's no self-reflection inside. There is no self-correction inside. हम एक तरफ बात कर रहे हैं 2047 में विकसित भारत की. I don't know why the date 2047, why not 2037, or why not 2048? So let's assume this 2047. But with this रूढ़िवादी सोच
कि नहीं हम सीनियरिटी को देखेंगे, हम इनोवेशन नहीं देखेंगे? आर्ट वी डिस्करेजिंग द एग्जिस्टिंग टैलेंट इन द कंट्री एंड ऑल्सो द फ्यूचर टैलेंट? So innovation in government is possible to an extent. आपने ठीक कहा कि वी आर encouraging काइंड ऑफ स्टेटस को, रूढ़िवादी काइंड ऑफ सोच. लेकिन इनोवेशन मेरे करियर में आई वाज एबल टू डू इन सर्टन डिपार्टमेंट्स एंड इन सर्टन वेज. देन आई रियलाइज दैट इनोवेशन भी एक चैनल में होगा. इस चैनल में हम इनोवेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, आउट ऑफ द बॉक्स. So in that channel, at least I was able to innovate. For example, I started something called eSampark, which was public service delivery through e-governance, electronic means. IT पार्क आपने कहा, वो भी हम लोगों ने बहुत एक्सेलरेट किया. पॉइंट ये है कि यू कैन बी इनोवेटिव इन द गवर्नमेंट इन सर्टन एक्सटेंट्स एंड नॉट बियॉन्ड दैट, बट वी शुड बी मोर इनोवेटिव एज अ सिस्टम. नाउ व्हेन आई बिकेम मोर क्रिएटिव, आई रिजाइंड. बिकॉज आई बिकेम सो क्रिएटिव दैट आई रिजाइंड, बिकॉज आई रियलाइज कि ये तो मैं तो क्रिएटिव टाइप आदमी हो गया हूँ. ये मीटिंग में बैठ के मुझे लग रहा है कि वी आर टू स्ट्रेट जैकेटेड. So I had to resign to become more creative. But to that extent, I could be creative in the government till I was there. कि ये मैं कर सकता हूँ. So I am known for, let's say, 4 or 5 things in my career, and one of them was this creative element that could be brought in. So officers can be creative, but the system can make them more. You're right to make changes and make them more innovative and creative. Give them more powers at their level. एक district level में SP है. SP can make a whole lot of changes in the policing in that district. The DC can change the way the district functions. It can become a totally different district, but he has to take approval from so many people. तो वो कैसे करेगा? So look at the paradox. I mean, you felt suffocated, and to feel good about yourself, to feel breathing, to feel alive, maybe, I don't know if that's a right adjective to put it. आपने अपनी क्रिएटिविटी को प्रायोरिटाइज किया और आपने सिविल सर्विसेज छोड़ दिया. इट्स अ लॉस फॉर द सिस्टम. इट्स देखो अ लॉस फॉर द मेनी बेनिफिशरीज, अ कॉमन आम आदमी लाइक मी, कि देखो यार एक उम्मीद थी वो भी चले गए. नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं. इतना बड़ा देश है. पीपल डू टेल मी कि आपने क्यों किया, लेकिन मेरा ये था कि सफोकेट नहीं था, आई वॉज ग्रोइंग. सो इट्स लाइक वो पैंट छोटी हो जाती है ना, कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो अब मैं तो इससे जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो मैं उस तरह का हो गया. आई वॉज फ्लावरिंग and I could do much more. I felt outside the system. I know you want to say something, but I was so creative कि अब मैं मीटिंग में बैठ के सोचा था, यार ये ऐसे क्यों नहीं कर लेते, मैं तो अपना जाके कुछ लिखता हूँ इस पे. So that became my thing, and it is a loss to the system. But 24-25 years which I did, I think I gave. अब हम ही में इतना 25 years का करियर होता है normally. So I think I was able to do what government decides. आप 60 पे रिटायर हो रहे हो, आई डिसाइडेड मैं 50 पे हो रहा हूँ, मेरा अपना मर्जी है, अब मैंने रूल फॉलो करके रिटायर हुआ हूँ. सर, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, व्हाट यू मेड फॉर योर लाइफ. और आपने इसको बहुत ब्यूटीफुली पुट अप किया है एक आशावादी में कि यू वर ग्रोइंग. बट पौधा कितना भी ग्रो, सर, एक ना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हर एक का होता है कि मेरे पास गुलदस्ता मेरे पास रहे. Right? So somewhere there where I feel that because you were growing and there was no, we can't deny the fact there was no room for growth. There was two officers in my farewell, two senior ladies. I'm sure the gents also agreed with them. There were about 40-50 people there in my farewell, IS officers. They said we could not do enough to keep Vivek in the system. अब मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, पर उन्होंने दिया, वही रिपीट कर रहा हूँ. We could not do enough to keep Vivek in the system. They are saying the same thing, that he became so creative that the system did not allow him to be himself. Now, I tell people who go on stage, they ask me कि public speaking कैसे करते हैं सर स्टेज पे. I tell them be yourself, but go with high energy. वही मानस, वही विवेक, स्टेज पे जाके हम मतलब पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे, अमिताभ बच्चन की तरह. पॉइंट ये है कि वो एनर्जी हम यहाँ पे अपना कंटेन करके रखे हुए हैं ना. ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो को अगर हम 10 टाइम्स बड़ा कर देंगे तो हमें तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वी हैव टू रिकॉर्ड इट. बट इन अ स्पेस व्हिच इज मोर अलाउइंग ऑफ योर क्रिएटिविटी, यू विल डू मोर. तो वो नहीं पॉसिबल था, तो उन्होंने कहा. तो आई थिंक आई एम probably different from most, but there are other people who are like me who have resigned. They may be rare. कुछ तो रिजाइन करके कि रिलायंस ज्वाइन करना है, ठीक है, वो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप क्रिएटिव हो और रिजाइन कर रहे हो, एक है कशिश मित्तल, आई नेम हिम बिकॉज ही इज अ जूनियर ऑफ माइन एंड ही केम ऑन माय शो, आई हैव अ गुड वाइब शो. ही इज अ क्लासिकल म्यूजिशियन.
I He's a heard about singer, him on from your earlier. beautiful singer. And he was like feeling कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो गाना है, तो क्या क्या खैर मैं उतना क्रिएटिव नहीं हूँ गाने गाने वाला. So again, coming back to contain creative, merit-oriented officers within the system, the onus of changing system lies with the parliamentarians or with the executive. No, there are administrative reforms commissions कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ये लाओ. मैंने एक बुक लिखी, फर्स्ट बुक लिखी, मूव ऑन बनी, नॉवल थी, बड़ी हार्मलेस. वो मैंने भेजी चीफ सेक्रेटरी को अप्रूवल के लिए. You can't publish a book without the approval of the government. Of course, like you were also saying, so if you're writing about your government or your company, obviously you can't publish anything. So I have to get the approval कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है. वो मुझे फ़ोन करता है, साहब ये क्या है? मैं कहा एक किताब है यार, एक फ़नी सी किताब है और इसमें गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं. अच्छा ठीक है. He got it approved from the chief secretary. Now, but without that approval, I cannot write. So the parliament or the system has to allow officers, unless they are doing some aberration, some transgressions, something wrong, to be that why should they take permission? Somebody's singing, somebody is poetic, now government has also amended that to an extent, and they are allowing people to do all this. Courses are also a lot. So training programs for civil service officers are now limitless. वो कभी ईशा फाउंडेशन, कभी किसी फाउंडेशन जाके ट्रेनिंग करके you can give your application and go for 20 days, because it is HR management like a company would do कि इस बंदे का अभी प्रेशर ज़्यादा हो गया, let him go for some training. We have a hostile neighborhood, changing, growing, may not be in favor of us in all aspects at a very rapid pace. Do you think our change, our modernization, हम जिस पेस पे ग्रोथ कर रहे हैं और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, क्रिएटिविटी दी जा रही है, चेंज इन सिस्टम्स हैं, आर वी अलाइंड विद द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड? I think India, as a major country of this region and the most populous country in the world, has to have good relations with the neighbors, number one. Number two, I have trained, as I said, for officers of neighboring countries myself. I've been to Missouri where they come for training because our academy is the best. Our National Center for Good Governance is the best, so they come. We don't go there for training. Now, when they come and they get trained, they're obviously close relations with us. We won't, there's a certain country where we cannot send people and they will not send people to us. पर ये बाकी countries के लोग आ रहे थे. अब उनमें से भी एक दो बंद हो गए हैं because of political friction. So I think India has to maintain those relations, and India has to be the mother country in a way, or big sister brother country, not in the wrong way, but in the right way. And India's government and India's system should rather be giving, advice, support to them, like we did in COVID pretty well. We supported many countries in COVID. But by having good relations with your neighborhood, you will be able to take on the rest of the world where required. Except for some incorrigible country which cannot be. बाकी सबके साथ तो बना के रखो ना, फिर हम और किसी को देखेंगे. अभी हम अगर सारी कंट्रीज हमारे खिलाफ हैं, फिर कैसे देखेंगे हम किसी So को? why we did it in, so we have कोविड के टाइम पे हमने किया, इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स के टाइम पे हमने किया, नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे हम लोगों ने किया. इनफैक्ट कुछ कंट्रीज का अस्तित्व हमने बनाया, वो नॉट बाय डिजाइन, बाय एज प्रोसेस हो गया वो, राइट? देन व्हाई सडनली वो लोग हमारे साथ ये ट्रेनिंग्स में आना बंद कर दिया, ये कुछ करना कर दिया? डू यू थिंक वी हैव गॉन ट्रेनिंग समवेयर में बाद रॉन्ग? में बंद किया ना, पहले गड़बड़ें हुई. नहीं तो have we made our share of mistakes and something wrong with We our have political we have narrative? definitely made our share of mistake. They have also made, but they may be pesky little, जैसे elder brother होता है फैमिली में, चार मान लो भाई हैं उसके, मान लो वो चारों में से वो तो naughty हैं. But the elder brother has to behave, na? Look after them also. So I think we could have done more to maintain those relations, and we have to. Neighborhood अगर ठीक है तभी तो मैं बाकी rest of the world को मैं take on करूँगा. I have to. And out of these 7 countries, let us presume there are 7 BIMSTEC countries भी कोई होती हैं, SAARC countries. Let us presume there are 7. 7 में से at least 5 should be very close to me. Then I can take on the rest of them. Do you see right now we have 5 countries close No, to we us? don't. That's why I'm saying we don't. All 7 are rather a little. एक आधा ठीक है अभी, वो भी balancing act है. So, will democracy make us a Viksit Bharat by 2047? And I'm coming to the point, if we compare ourselves with our neighbor China. I have enormous respect for what they have done to their country, bringing so many people out of poverty line, growing economically very well.
technology parameters. In fact, I had a privilege of hosting General Shukla in one of my podcasts, and he mentioned very highly about the achievements on the technology in military and again civil military confluence and all. He mentioned on all those topics with lot of data points. Now we have a neighborhood, we have a neighbor who unfortunately is not a friend of ours. We have a complex, as Dr. Jaishankar puts it, a relationship with them. How do we replicate that level of success? Is democracy a benefit? Is a positive thing or a negative It's a thing? positive thing. देखो, many people say India needs a dictator, ये कर देंगे वो कर देंगे तो इंडिया सीधा हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. मैं आपको बता रहा हूँ. India's system is still the best because it's a democracy. The happiness index, if you look at China, ठीक है आपने बना दिया, गुआंगजो बना दिया, शंघाई बना दिया, but how the bigger picture operates? What is the family connect over there? आपका आपका क्या सिस्टम है? जर्मनी में कहाँ फैमिली है? इटली में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है. सो द इफ यू लुक एट द सोशल एस्पेक्ट, इंडियाज सोसाइटी इज स्टिल कंफर्टेबल. इंडिया में हम आते हैं वापस कहीं बाहर से. द सोशल कनेक्ट गिव्स अस अ काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस व्हिच अदर्स कैन नॉट. वो वहां पे आप अकेले बैठे. पॉइंट इज कि सोसाइटी ऑफ इंडिया इज कल्चरली स्ट्रॉन्ग, ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग. अभी ब्रेकअप हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है, दे आर एबरेशंस. दे आर एबरेशंस. इफ यू लुक एट द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, not more than 0.01% would have had a breakup. If you look at what you said, ki democracy or dictatorship or whatever China has, the thing is that विकसित भारत हमें इसी में बनाना पड़ेगा. जितना विकसित होगा उतना बनाना पड़ेगा. India is never going to be perfect. Neither is China. You look at China said that we will learn English and we will outdo India 20 years ago. अभी तक वो इंग्लिश नहीं सीख पाए. इंडिया में जो भी इंग्लिश का काम हम करते हैं एज अ कंट्री, द फाउंडेशन विच वी हैव, फार सुपेरियर. इवन आफ्टर 20 years China cannot learn the English that we know. I don't think so, but they haven't been able to do it. So my point is that every country has its frailties. They are doing very well on infrastructure. We may be doing well better socially, even despite all the frailties. We may be doing well culturally. We may be doing well in terms of wellness, in terms of human index. अब ये भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स अडॉप्ट किया है एज जीडीपी. भूटान सेज दैट नो जीडीपी, हैप्पीनेस इंडेक्स होगा असेसमेंट. इंडिया, इफ यू लुक एट इट, despite all the things, people have families that bond together. And in a huge country like India, अगर एक दिन में 100 मर्डर हो रहे हैं, 1000 भी हो रहे हैं, तो they are only exceptions to the rule. So I would say that democracy is the only way to function for India. And we need to clean up the system like we've been talking for an hour. How to improve gradually. मैं बोलता हूँ कि आप ह्यूमन लाइफ में आए हो तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बट आप इम्प्रूव हो सकते हो. अगर मेरे अंदर वो आईफोन 17 पे पहुंच गया है, मैं अभी 7 पे पहुंचा हूं, तो मैं अपना अपग्रेडेशन भी तो करूंगा ना. बट आई कैन नॉट बी परफेक्ट. सो लेट इंडिया कीप ऑन इम्प्रूविंग एवरी 2-3 years, 2-3 years, 2-3 years. There are things now which were not there 5 years ago. I'm not talking only about technology. I'm talking about systems also. Let us give credit where it is due to the government also. There may be some cases which were started projects in the Congress time and now BJP is doing it. That's a different matter. But there is progress gradual. A Viksit Bharat 47, today we are in 25, 22 years, anything can happen. We might say in 47 ke China fail ho gaya. So, what do you think is plaguing us from becoming Viksit? And what do you think is a 5 point program? Again, you have a choice of making 4 recommendations or more than five. You know, that is required for India to change, to become developed in all contexts. सिर्फ developed ये नहीं कि सर मतलब I become a, it doesn't matter. It matters, yes, कि हम 4 trillion plus economy हो गए हैं, हम third largest या fourth largest economy हो गए हैं, but per capita is at an abysmal place. So when I am talking about developed, means I am talking developed in all possible बिल्कुल ठीक है. reasonable sense. We are What do you? still a poor country. And I'm happy you said four because I'm a cricketer, so fours are very important in cricket, you know. And I'm an opening batsman, तो 6 नहीं मारते थे, हम चौका ही मारते थे. So one point, first point, the economic disparity is still glaring. When we came from Delhi towards Noida, the studio we came to, we were looking at society. I showed you a truck and we both saw where there was a troop of families
going for a religious function. They were dancing in the truck. Either left ko, there was a man smoking a bidi, even today bidi, and he's walking, and he had a headgear. There was a girl from a college, glitzy kind, fashionable girl walking by him. In a microcosm, we get a sense of what India is. In that microcosm, I can tell you that India can only be improved if education levels, healthcare levels, and basic economic facilities are available to all. If, as a poor person, I'm not able to afford education for my children, then I'm not Viksit. The country is not Viksit. If I have a small TV, somebody else has a big TV, then it's okay. But I have a TV. Or if I have a cycle and the other guy has a Mercedes, at least I should have something which is, a two-wheeler at least. So the point is that development has to take place. And for India to do that, we need to give opportunities to the youth. But number one is education. So number one is education. Number two, as I mentioned, healthcare. Healthcare facilities will help people to live quality lives. If the guy is spending so much money and time at hospitals, and supposing he's got bad habits like smoking and drinking, social changes have to take place. Government ka role comes in both these aspects. Education and healthcare has to be emphasized by the nation. Defense, education, and healthcare have to have the maximum budgets. Roads and highways, okay, but these three things, the US spends 14% or 18% of its GDP on education. We spend 1% or 2%. So where are we? And our nation needs it much more than the US needs it at present. So healthcare is number two. Number three, I would say, skill development. अब ये जो youth है, I go across the country, I meet people from colleges, universities, offices. They lack soft skills. They have technical skills. वो भी कौन पढ़ा रहा है उनको, that's a different matter. There are universities where there are 6,000 computer science seats, and how many people are going to teach them? Who is teaching them? So they're not getting quality education. We need that skill and quality to improve over there. And for that, the system as well as the private sector. Number four is things like sports need to be emphasized for cultural change and for balance in the society, harmony. Drugs, social problems like drugs, unemployment related, crime related, you mentioned, are coming because we don't have emphasis on things like sports and fitness. In countries where sports and fitness are emphasized, drugs are not that much for in that society. A child who plays for 45 minutes outdoors will sleep on time, 1 hour. Otherwise, screen time or alcohol or drugs के तरफ उसका ध्यान जाएगा. So I think as a country, we need to prioritize certain things. Health is number one. Education, fitness, and skills. These four. So I have a long question for you. I'm so sure the answer is going to be comprehensive and short. What are key governance flaws that we are having? How do we reduce the gap strategy and implementation के बीच में? And what is that we can, you just answered कि विकसित भारत के लिए from a society fabric हमें क्या करना चाहिए, but what is our execution program that we should have? ये तो हो गया strategy वाला. Execution program that we should have कि ये 5 चीज़ें करनी चाहिए, very focused, and 2047 we are there. So, there's a large gap between policy and implementation, execution. And there's a story which I must tell you quickly. There was a monkey and there was a cat. And the cat goes to the monkey and says, Mr. Monkey, this dog is troubling me. And monkey says, no problem, why don't you also become a dog? So the cat goes and comes back after an hour and says, Mr. Monkey, you told me to become a dog. Then he won't trouble me, but how do I become a dog? He says, see, policy is my problem and implementation is your problem. How do you become a dog is your problem. So execution and implementation जो है, वो that is far cry from what you sit in the Delhi ministry. वो वहाँ पे झुमरी तलैया में, कोटा में, उधर कोची में क्या हो रहा है, वो कोई लिंक नहीं है उसका. So we need to be grounded. Get the policies and the schemes that you're talking about from the ground. उनको क्या चाहिए? आजकल एक अच्छी बात है कि 1 month के लिए या 15 days के लिए न्यू स्कीम, न्यू लॉ, न्यू एक्ट वेबसाइट पे लगा देते हैं, पब्लिक का इंटरफेस हो जाता है. बट वी नीड टू डू मोर ऑफ दैट. नंबर टू आई वुड से कि एग्जीक्यूशन तब होगा जब हमारा इंसेंटिव और ट्रेनिंग होगी उस ग्राउंड लेवल स्टाफ की जो हम बात कर रहे थे. सो द IAS ऑफिसर, द IPS ऑफिसर,
the person at the level of the execution in the village, there is a beautiful agency known as the Anganwadi worker. They are the best in India, let me tell you. मैं एज DC I've seen, काम कराना है गांव में तो आंगनवाड़ी वर्कर को बोलो, वो करा देगी. शी नोज ईच एंड एवरी होम इन द विलेज, एंड हर लेडी को वो जानती है. कोई स्कीम, कोई अवेयरनेस, कुछ इंफॉर्मेशन, आंगनवाड़ी की लेडी जो है उसको दे दो, पूरे गांव को पता चल जाएगा कि ये होने वाला है, पूरी कंट्री को पता चल जाएगा उसके ज़रिए. सो यूज़ दीज पीपल. एंड जो निकम्मे टाइप के लोग हैं, मान लो फॉर अ मिनट कोई ऐसा एजेंसी है जो गांव में है लेकिन वो नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करो. देर आर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, देर आर तहसीलदार्स, देर आर SDOs in charge of a certain area. So these people need to be, revved up. Police, let me tell you, the third is security. If a girl or a woman is to travel or go out, education stops at class 10. I'll tell you why. I go to a village, ये 10वीं की टॉपर है लेकिन हमने इसको 11वीं में नहीं भेजा. What is this? सर उसको जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर, 11वीं का स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, 10वीं तक यहीं था. Because of security, that bus goes to that village which is there and she will come back by 5:30. अंधेरा हो जाता है, हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे. This is the bane. Then another bane is monthly cycles होती हैं गर्ल्स की. स्कूल में कुछ नहीं है. They cannot go to school because of those monthly cycles. और उसके बीच में अगर एग्जाम आ गया बोर्ड का या कुछ आ कुछ गया भी है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, रोक देते हैं उसको जाने से. अच्छा, फिर वॉशरूम्स कहाँ पे हैं वो टॉयलेट्स जो उनको चाहिए. सो दिस इज, ये इंडिया इज अ रियलिटी. ये प्रॉब्लम्स जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, गर्ल्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी. अच्छा, देन कम टू स्कूल्स. वी आर रेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन. गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के पास इंसेंटिव क्या है पढ़ाने का? कोई अगर फ्लाइंग स्क्वाड आ रहा है तो पढ़ाना इज़ नॉट द थिंग. यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. बहुत से हैं जो कि पढ़ा रहे होते हैं. आई वॉज सो हैप्पी वन डे, आई वेंट एज अ ऑफिसर इन चार्ज समथिंग. मैं गया तो वो एक बंदा हमें काजू खिला रहा है. तो मैंने कहा आप, कहता है सर मैं हिस्ट्री टीचर हूँ. मैं, आप क्लास में जाओ. वाई यू कमिंग हेयर विद दीज काजूस? बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑफिसर आए हैं, प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया अपने कॉलीग्स, तुम जाओ क्लास में. थोड़ी देर में हम राउंड लगा रहे हैं तो वो साहब इतनी ज़बरदस्त तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहा था वो. आई वेंट ऑन अ राउंड, आई वेंट टू हिज क्लास, आई सेड तुम तो छा रहे हो और तुम वहाँ काजू खिला रहे हो हमको. तो इंडिया इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड. देयर इज़ अ इंस्टाग्राम हैंडल, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स. हाँ, वो ये इस टाइप की चीज़ें हैं. वो एक बंदा अपना, उसके पास वो नहीं है ये वाली स्टॉप क्लॉक. वो पब्लिक का जो एक वहाँ पे वो है ना, वो स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर लगा होता है रोड पे, उसमें अपनी स्पीड चेक कर रहा है दौड़ने की, 100 मीटर स्प्रिंट की. वो उसमें चेक कर रहा है अपनी. इंडिया में मतलब वो बच्चा है बेचारा. और तो ये इंडिया की रियलिटी है. उसको कहाँ तक आप वो मर्सिडीज़ वाले या वो लंबगनी वाले को ले जाओगे. लास्ट पॉइंट ऑन दिस, व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, आस्क द बॉयज़ एंड गर्ल्स कि लंबगनी के स्पेलिंग आते हैं तुम्हें? नहीं आते सर. मैं, लंबगनी चाहिए? हाँ चाहिए सर. फिर क्या करोगे? एक लंबगनी मिलेगी तो दूसरी भी चाहिएगी. और नहीं सर, एक ही बहुत है. अच्छा, 6 महीने बाद पुरानी हो जाएगी. फिर वो सोचते हैं कि ये सर का मतलब क्या है. What is he coming to? तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें लंबगनी नहीं चाहिए. तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें पैलेस नहीं चाहिए. तो ये एक एस्पिरेशनल लेवल भी थोड़ा सा हमारे देश के लिए, इट हैज़ टू बी टेम्पर्ड. सोशल मीडिया इज ब्रिंगिंग दोज थिंग्स विच आर अनडूएबल. दे आर नॉट डूएबल. एवरीबडी कैन नॉट हैव पैलेसेस and Lamborghinis. So we need to have equitable distribution of wealth to an extent, and the dirty rich will still be dirty rich, but equitable distribution amongst the rest in a democracy. तो बड़ा मुश्किल काम है, but we can improve. So just a question to end this particular section. Do you see 2047 India going the US way, where the disparity is going to be high, the crimes are going to be high, socioeconomic factor is, society is not in the best safest zone, or do you see it like the Scandinavians or the Nordic countries where? Neither, unfortunately, neither that nor that. I don't think we're going that way where our towns are so unlivable. There are towns in the world, I shouldn't name, but Johannesburg, for example, where the crime rate in the city is so much that you can't walk anywhere. Tourist भी कोई नहीं जा सकता. इंडिया में अभी भी आपको ऐसा एरिया नहीं मिलेगा जहाँ आप जा ही नहीं सकते, except certain pockets, let's say terrorism affected areas. तो ना वो
उस तरह का होगा ना स्कैंडिनेवियन, आई डोंट थिंक वी कैन रीच दैट लेवल. फिनलैंड में क्या है, 6'4" सारे हैं, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लुक्स इन इंडिया. आई एम सेइंग एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट, वेरी यूनिफॉर्म. वेरी यूनिफॉर्म. एवरीथिंग इज, बटन दबेगा तो वही चीज़ होगी जो एक्सपेक्टेड है. एक ही मॉडल है, वैनिला फ्लेवर है. यहाँ पे पता नहीं, वो आप एयरपोर्ट पे वो दबाओगे तो 6 आ जाएंगे, कभी 0 आएगा पैकेट. तो कोई पता नहीं. Our systems was also very diverse, sir. वही कैसे रिएक्ट करेगा अनप्रेडिक्टेबल, हम टेक्नोलॉजी वगैरह सब फेल हो जाती है हमारे यहाँ डायनामिक. लेकिन इंडिया का जो जलेबी है, लड्डू है, रस्किन बॉन्ड का देखा आपने लेटेस्ट? अभी 90 का हो गया वो. 88 के जब हुए तो बोलते अब मैं 2 जलेबियों की तरह हो गया हूँ, 8 और 8. तो इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी लाइक एनी अदर कंट्री, बट इंडिया होपफुली विल बी बेटर. एंड स्पिरिचुअली स्पीकिंग, this is the upward curve era. Those who are learning meditation, those who are learning to go within, and दकियानूसी चीज़ों से हट के अगर आप रियली स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे तो आई थिंक दे विल बी बेटर हार्मनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ. और उसके बाद 47 हो या कुछ भी हो, वी विल इम्प्रूव ओनली, लेकिन परफेक्ट नहीं होंगे. So you're a widely traveled person, and you've been very closely associated tourism से भी. या Now I want to take your subject matter expert opinion on that. कि tourism से why are we doing so poorly on that? What can be done better? And what are again 5 things that you want to change, maybe more or less, कि जिससे आपको लगता है कि tourism, and is India ready for that level of tourism? या वी शुड बी रेडी. 4 थिंग्स आई टेल यू अगेन. पॉइंट ये है, इंडिया का डोमेस्टिक टूरिज्म हैज़ इम्प्रूव्ड. People are flying more than ever before. We see the fracas also. But foreign tourists, if there were 10 times more foreign tourists coming to India, India can accommodate them. और इंडिया की इकॉनमी विल गैलप. सिंगापुर की इकॉनमी इज बेस्ड ऑन टूरिज्म ओनली. जितने लोग सिंगापुर में रहते हैं उससे डबल पॉपुलेशन टूरिज्म आता है, डबल से ज़्यादा पॉपुलेशन से डबल. इंडिया का अगर 40 लाख टूरिस्ट कम, लेट अस प्रिज्यूम फॉरेन टूरिस्ट टुडे, 4 करोड़ आ जाएंगे अगर, तो what will be the impact? Impact will be that jobs will be created. Tourism में services sector है. So I think we need to do 2 things. Number 1, safety and security of women. CCTVs are there, lights लगाओ. I'm glad that you said that. It's very important. When people are coming to India, they should feel safe. फिर एक एपिसोड होता है, कोई गोवा में हो गया, कहीं हो गया, वो फिर पूरे वर्ल्ड में जाता है. What is your PR मैनेजमेंट ऑल्सो? वो हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है साउथ अफ्रीका में, या उधर भी हो रहा है थाईलैंड में, लेकिन वो इतना नेगेटिव. इंडिया का नेगेटिव न्यूज़ आएगी सबसे पहले. तो व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ योर परसेप्शन? तो टूरिज्म इज अबाउट परसेप्शन मैनेजमेंट, मेकिंग प्लेसेस सेफ. देन आई वुड से वी आर वेरी गुड एट IT में इतने अच्छे होने का फ़ायदा क्या? इफ़ योर वेबसाइट ऑफ टूरिज्म और योर ऐप डजंट वर्क वेल, योर ऐप शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी, इन सॉफ्टवेयर एटलीस्ट. सो आपका ऐप अगर फ्रेंडली होगा, वो इंग्लैंड में बैठा टूरिस्ट अभी डिसाइड कर रहा है मैंने कहाँ जाना है, ही इज़ बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडिया, उसको जो ऐप फ्रेंडली मिलेगा वहाँ पे जाएगा वो. उसको इंडोनेशिया इंडिया में फ़र्क नहीं पता उसको ज़्यादा, उसको जो यूज़र फ्रेंडली मिलेगा वहाँ पे जाएगा वो. तो मैं टूरिज्म में रहा हूँ. यू ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ बुकिंग अ ट्रैवल और अ होटल और वट एवर. Number 4, I would say training and skill development of the staff. गोवा इज़ अ टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट. गोवा का हर बंदा एम्बेसडर है गोवा का. आप वहाँ जाएंगे तो वो हर पॉपुलेशन का हर इंसान जो है वो टूरिस्ट फ्रेंडली है. और कई स्टेट्स में इंडिया में मतलब जा ही नहीं सकते आप, उसको टूरिस्ट का मतलब ही नहीं पता. तो यू हैव टू ट्रेन पीपल एट द ग्राउंड लेवल, स्किल डेवलपमेंट, उनको एजुकेशन, उनका बात करने का ढंग. कैब ड्राइवर्स को सिखाना कौन सा मुश्किल है? लंदन का कैब ड्राइवर आपने देखा, हैज़ टू अंडरगो एन एग्जाम ऑफ ईच नेम ऑफ ईच रोड ऑफ लंदन, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम. हियर द कैब ड्राइवर्स आर सिटिंग आइडल एंड वाचिंग रील्स. उनको इंग्लिश सिखा दो, उनको कुछ बात करने का थोड़ा सा ढंग सिखा दो, सो दे विल बी मच बेटर. सो स्किल डेवलपमेंट. 2047, sir. If India becomes a developed nation, what we dream of, और नहीं बनता, क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेगा? One fundamental reason. Leadership or lack of leadership at all levels, not only the prime minister level, also the chief minister level, bureaucracy, corporate leadership. There are companies in India which can do so much for the country, so much more. Huge companies, Reliance, Tata, they can do much more for the country. Tourist spots, sports development centers, football, hockey, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो डेवलप नेशन में हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें सबका योगदान होना चाहिए. सो आई थिंक वी कैन बिकम, बट लीडरशिप इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स.
All right, sir. So I've asked you very easy questions. I've just the toughest section to go, and I'll take a I'm the minute. only one who could have answered your questions. What a tough questions. So, um, there's a rapid fire that I have with you, and I'm going to No refer to problem. this. I'm good at it. And Hopefully. chaliye, sir, we will see. And of course, the rule is you don't have to think; it has to be Just reflexive. no blink. Yeah. What percentage of bureaucrats you think are actually efficient? 20, 10, less, more? I think 30. 30% are actually Efficient, yeah, efficient. yeah. Okay. What's more dangerous, corruption or incompetence? Corruption. One process that exists only to slow things down. Checks and balances, red tape. How many percentage of ISS officers read every file? 0. Why do corrupt officers really get punished? I think they should get punished. They do get punished, but more should happen. We discuss this more in the detail, so it's okay. Would fix 5-year tenures make IS better? 3 years tenure is okay. All right. Right now it's 1 year average. So 3 years is fair enough. Which outdated practice must die? File noting, paper approval, signatures. Paper approval. I thought that from an IT person, that is the answer, sir. What kills more? Projects, corruption, laziness, fear of decision? Corruption. How many IS officers actually innovate? Percentage. I think everybody tries to, but I would say 10%. All right. What percentage of government money reaches the ground? It was 20% during Rajiv Gandhi's time. Now what is it? I wouldn't know that, but I would hope at least 30 to 40 to 50% reaches. Even after UBT? I hope so. DBT, sorry. Yeah, no, I hope more than 50%. Okay. What's the most overrated quality people assume IS officers have? Overrated quality. Yeah, that people assume IS officers have. That they're very skillful or knowledgeable. Who slows? I disagree that that's an overrated with my experience. Who slows projects more, officers or ministers? Officers. One politician who surprised you? Pleasantly, or it can be, or unpleasantly, whatever. Yeah, a minister I had, and she was the education minister of Haryana, and she was very quick in decision making. Her name is Geeta Bukkal. All right, sir. If India digitized everything tomorrow, how many people lose unofficial power? A large percentage, but we must do it. You didn't mention the percentage, sir. 20. What's the most shocking internal IAS truth citizens won't believe? Shocking, I don't know, but they spend a lot of time having tea and gupshup. 11:30 a.m. and 3:30 p.m. What does India need more, honest officers or competent officers? Honest officers. One IS of reform India lacks courage to implement. IS reform. Yeah. I think recruitment from outside, lateral entry more should be there. People coming in at the age of 35, 45. Good thing. So believe me, till now you're the guest who aced it. This has been really awesome, and Thank you. Thanks a lot, sir, for coming over. Not at all. And any message you want to give to the youth? Anybody? Okay. Feel free. So I would say 2 things. Number one, the pressures will be there, but don't be confused. Don't be under pressure. Be yourself. Number 2, be an all-rounder. Develop all-round skills. Don't only go for chemistry or physics or electronics. Be a communicator. Be a sportsman. Be a musician. Great, sir. So that was Vivek Atre, sir, आपके लिए. And I hope you like the content. At least, if not me, at least sir. And do give your thoughts and subscribe or like the channel and give your feedback. What else you would like to learn, and we'll be happy to have guests like that. Thank Good you, interaction. everyone. Thank you. Thank you, Manas. Jai Hind, everyone.